Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with a new lecture. New lecture in the sense कौन तम एग्जाम पे पुराना lecture but गोटे नुआ टॉपिक ए टॉपिक रे कौन डिस्कस हबो ना किछि नै खाली एग्जाम पर्सपेक्टिव रो कौन इंपोर्टेंट अछि जेतु एग्जाम इज वेरी नियर तो आमे डिस्कस करिया कि को ऑर्डर रे पढले भल रहइबो एंड को चैप्टर रो कौन रो प्रेफरेंस देले भल रहइबो अगेन मु कहि दोछि दिस इज जस्ट एन एनालिसिस आउट ऑफ एमटीपी आरटीपी वर्कबुक स्कैनर एंड ट्रेंड एनालिसिस पांचटा जिनसर एनालिसिस देखिला परे जहा बेटर रहिबो सेडा मु कहूची नॉट एक्जेक्टली कि एडागा एग्जाम रे पळा आसीबो कहिके हला एडा होची डिस्क्लेमर आबर फाइन तो फर्स्ट स्टेप लेखो को चैप्टर कौन देखिबो कैटेगरी ए चैप्टर्स एंड कैटेगरी बी चैप्टर्स कैटेगरी ए चैप्टर्स एंड कैटेगरी बी चैप्टर्स फाइन कैटेगरी ए चैप्टर्स रे ऑब्वियसली हमर आसीबो कंपनी लॉ कंपनी लॉ रे वी हैव डायरेक्टर्स सब इंपोर्टेंट ए प्रेफरेंस जगह पढ़िबो तमे राइट्स ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल नेक्स्ट रहिबो तारे रहिबो शेयर होल्डर्स जहाँ भी चैप्टर अच्छी शेयर होल्डर्स रो जहाँ भी आउ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल एडा रहला तमरा कंपनी लॉ रो हैला बेसिकली मु कहि दोची देन देखिबो कोन हबो एटा टिके ओपन कोन बंद हिरा तापरे देखिबो तमे फैक्ट्रीज एक्ट हैला फर्स्ट प्रेफरेंस देबो फैक्ट्रीज एक्ट को देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट थैंक यू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हैला देन देखिबो ग्रेच्युटी एक्ट ग्रेच्युटी एक्ट आओ बाकी हमर कमर्शियल रो एटा तो रहला कोन हमर इंडस्ट्रियल लॉ तापर एटा रहिबा हमर कोन कमर्शियल लॉ भितरे व्हाट वी हैव इज लाइक फर्स्ट थिंग होची हमरो तमे सारीबो फर्स्ट होची सेल ऑफ गुड्स एक्ट फर्स्ट तमे देखियार अछि सेल ऑफ गुड्स एक्ट तापर देखिबो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडा होची तमरो कोन ए कैटेगरी चैप्टर्स माने ए कैटेगरी चैप्टर्स माने कोन तमे तमरो अवेलेबल टाइम रो 70% एडा को दबो 70% ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड टू दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स बुझिला एतिकी सारिला पर आगा तमे आ बाकी को जिवो एतिकी जदी सरुनी कहिले प्रेफरेंस रहइबो खाली एतिकी आगा सारिबा ऊपरे बिकॉज 70 मार्क्स अटेंड करिगिरी 55 टू 60 स्कोर करिबाडा बेटर तमे जदी 100 मार्क्स अटेम्प्ट करियो 30 मार्क्स स्कोर करिवो तो सेडा बहुत खराब हबो दैट्स व्हाई कोन हम 70 मार्क्स में पढिबा 70 मार्क्स भल से पढिबा एंड ताडू 55 की 60 आराम से स्कोर करिबा बुझिला तो ए कैटेगरी चैप्टर्स गुडा एमिति जिंदगी तमे प्रेफरेंस देले जिंती हेले 70% ऑफ द मार्क्स तमे आराम से स्कोर करि पारिबो क्लियर तो एबे हमें फर्स्ट जिबा कंपनी लॉ रे आ एडी कोन रिमेनिंग अदर सब बी कैटेगरी हला जति भी अछि सब बी कैटेगरी रखि पारिबो मु ए बी सी तीनडा करूनी बिकॉज देखो किछि मीनिंग नै सेडार आमे जानछु इंस्टीट्यूट को जोड़ा इच्छा से सेडा का करियो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोन जदी हमें फर्स्ट ए कैटेगरी माने मोस्ट इंपोर्टेंट कहिले जाईगिरी तमे जदी सेडा को प्रेफरेंस देई पारछो तो दैट वुड बी फार बेटर फाइन तो एबे फर्स्ट हेडिंग द कंपनी लॉ रे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोन हेई पारिबो पॉसिबल क्वेश्चंस कोन हेई पारिबो देखिबा ऑन एन एस्टिमेट बेसिस
କିଛି ବି ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି ପଚାରି ପାରିବ टेलीग्राम चैनल रे जे जे किछि टेक्स्ट करिचंदी हैला कमेंट सेक्शन रे किछि टेक्स्ट करिचंदी सेमानंगर कथा मध्ये एड्रेस हेई पारिबो एबे भी तांके कोन रेस्पोंड करि पारिबे चाहिले एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रेस्पोंड करि पारिबे या आकांक्षा आकांक्षा जे भी अछि थैंक यू सो मच हैला भलो कमेंट पई रिमेनिंग एलएलपी एक्ट जहाँ भी कन्वर्शन टॉपिक टा अछि सेटा अगेन अपलोड हे जेइछि एबे हमें देखिया खाली कोन एथरे इंपोर्टेंट जिंस आगे डिस्कस हबो हेडिंग दियो क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी रो फर्स्ट क्वेश्चन होची क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स देन लिखो डिन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेकेंड होची हमर कोन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देन आछि हमर डिस्क्वालिफिकेशंस रो किछि केस लो क्वेश्चंस डिस्क्वालिफिकेशन जगह भल से मन रखिबो डिस्क्वालिफिकेशन रे वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जोड़ा रे कि पूरा पूरा कंपनी कोन डिस्क्वालिफाई हे जिवो आ कोन खाली डायरेक्टर रो डिस्क्वालिफिकेशन बोथ देखिबार अछि तुमको इंडिविजुअल एंड पूरा कंपनी रो दीडा जगह हैला एडा तो रहिला डायरेक्टर्स रो हैला बाकी आउ गुटे नुआ क्वेश्चन कोन ऐड हेची ना फॉर्म्स रो फॉर्म्स फॉर डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स को प्रकार फॉर्म गुडा को फाइल करियर अछि से जिंस रे धरिकी से कोन क्वेश्चन पचारची देन लेखो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स powers of directors very rare question तो सेते पे मते लागुची एडा आसीबार चांसेस अछि एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज आर वुमेन डायरेक्टर जोडा रगी बिट क्वेश्चन हमको बारंबार देखिबा को मिलेबो वुमेन डायरेक्टर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स तळे लेखो एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड restrictions on powers of board restriction on powers of board हैंडराइटिंग रे टिके खराब होची हाथ को जेतो माड़ बाजीची तो एडजस्ट करिबो रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड्स माने किंदी रेस्ट्रिक्ट करचंदी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रो पावर गुडागो हैला क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पाखरे लेखो ड्यूटीज तार ड्यूटीज मध्य से भितर आगे पळासबो क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज गुडा को मिसिकी क्वेश्चन आसुची वी हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2017 डिसेंबर स्कैनर क्वेश्चन एंड वर्कबुक क्वेश्चन आल्सो ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैला वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ए दिडा जिंस ऊपर बेसी ध्यान दबो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
बारंबार सेडागा आसुची हैला से रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड कंटिन्यूअस क्वेश्चन सेडागा आसी रेजिग्नेशन कैन बी अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड एडी लेख आ गुटे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स तुम डायरेक्टर्स जहाँ भी ड्यूटीज अच्छी एडा को धरिकी केस लॉ क्वेश्चन गुड़ाक हो पारिबो हैला केस लॉ क्वेश्चन कैन कम देन नेक्स्ट टॉपिक एडारे loans and advances loans and advances loans and advances excuse me या an important question for this attempt may be तमरा MTP रे से डिस्कस करछि तो आसीबार चांसेस अछि penalty for not appointing key managerial personnel penalty for not appointing penalty for not appointing key managerial personnel penalty for not appointing key managerial personnel then next lekha company law prospectus and its types आमे कंपनी लॉ रो अदर पार्ट्स रे ऑलरेडी जो क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव रो इंपोर्टेंट खाली सेति की अगर डिस्कस करछु तो अगेन तुमको सेडा माने क्लासिफाई करिया दरकार नहीं बट मु जेहेतु ए पर्टिकुलर अटेम्प्ट पे इंपोर्टेंट कहूची तो दैट्स व्हाई अगेन मु रिपीट करूची बट बाकी चैप्टर्स रे कोन जेति की मु पढी छी सब उडा जिंस तुमको देखिबा को पड़िबो prospectus in its types and most important is our red herring prospectus red herring prospectus red herring prospectus तापरे shifting of registered office रो case law question आसी परियो we have already discussed shifting of registered office case law question then आसी हमरा certificate of incorporation certificate of incorporation section 8 company and OPC company very important section 8 and OPC company बहुत इन डिटेल माने लेक्चर अवेलेबल अछि सेडा रे अगेन एंड अगेन देखिबो काहे कि सेक्शन 8 किबा OPC कोडा गोटर क्वेश्चन बाध्य होई कि आसीबो आउ नेक्स्ट होची हमर स्वेट इक्विटी शेयर्स 8 मार्क्स क्वेश्चन आसुची डिसेंबर अटेम्प्ट्स रे ऑलमोस्ट एवरी डिसेंबर अटेम्प्ट्स रे तमे देखिबा पाइयो एडा पुरना अटेम्प्ट कोच 2012 बिफोर स्वेट इक्विटी शेयर्स एडा लास्ट आस्तिला हमर 2019 डिसेंबर 8 मार्क्स पई हैला स्वेट इक्विटी शेयर्स बोनस शेयर्स एंड राइट इश्यू सबुड इंपोर्टेंट होचे एडा बट बोनस शेयर एंड राइट इश्यू रे मध्ये क्वेश्चन आसी परबो then lifting of corporate will lifting of corporate will lifting of corporate will then conversion रो गोटे क्वेश्चन आसीबो कन्वर्शन दा जोडा हमें पढिछु ऑलरेडी कन्वर्शन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू ओपीसी प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी सॉरी प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी सेक्शन 8 नहीं conversion of private company into OPC etc
तापरे बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, तापरे तुमरो अल्टरेशन ऑफ एमओए, एमओए एओए रे अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड स्कोप ऑफ एओए, माने एमओए रे जदि कंटेंट्स गुडा को हमको अल्टर करियर अछि तो को प्रोसीजर फॉलो करियर अछि तार किछि 6 to 7 मार्क्स रो क्वेश्चन आसुची। एंड स्कोप ऑफ एओए माने जदि एसोसिएशन माने कोन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रे जदि किछि जिंस मेंशन नाही तो से जिंस को कोन करी कि चेंज करि परिबा एंड जते जे मेंशन न करले को एक्टिविटी हमें करि परिया कोडा हमें करि परिबानी से दीडा जिंस गुडा का हमर कोन आराम से एडी डिस्कस हे जिबा कथा। एग्जाम आगे टिके खाली देखिदब कि कौन केंदे होची बेसी इन डिटेल जिबा दरकार नहीं। तापरे गुटे लेख पॉसिबल चांसेस आर देयर एमटीपी 2020 रे आसी एंड 2016 जून रे आसी गुटे क्वेश्चन कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इफ सो व्हाट प्रोसीजर डज इट हैव टू अडॉप्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैला 9 मार्क्स में से पचारची। तो इन स्कैनर इट्स क्वेश्चन पेज नंबर 5.332 5.332 रे तुम लिखि पारिबो कैन अ एनपीओ can a NPO be registered as a company under Companies Act, under Companies Act। लिख लो एतिकी। ट्रस्ट डीड क्वेश्चन टा मुझे एमटीपी रे चेक करथिली सेटा रॉन्ग दिया आइछि आंसर टा। ट्रस्ट डीड रो क्वेश्चन टा एंड स्कैनर रो क्वेश्चन टा मैच होनी तो खाली स्कैनर क्वेश्चन जहां भी अछि सेडा का फॉलो करिवो एंड स्कैनर क्वेश्चन रे से आंसर टा देनी ट्रस्ट डीड रो हैला तो मु सेडा का चेक करथिली। तो ट्रस्ट डीड रो जदी चाहिबो तो आंसर टा लिखि दियो एबे ट्रस्ट डीड रो क्वेश्चन रो आंसर टा। ट्रस्ट डीड रो सिंपल मीनिंग होची अ लीगल डॉक्यूमेंट, a legal document, trust deed is a legal document that creates a trust, giving a person or organization, giving a person or organization, giving a person or organization the right to manage, the right to manage, the right to manage money or property for someone, money or property for someone, for someone। The purpose is to set out the rules for, is to set out the rules for, set out the rules for establishing and operating your fund, establishing and operating your fund, and operating your fund।
ट्रस्टेड रे जदी काउ किछि डाउट अछि पचारि परिबो काहे गेले क्वेश्चन रो एमटीपी आंसर टा भूल अछि हैला तो स्कैनर क्वेश्चन रे तो से देनी 2022 डिसेंबर रे देछि से 5 मार्क्स पे बट एमटीपी रे से 11 मार्क्स देखैछि तो मते लागुनी एटा 11 मार्क्स में पचारिबो बिकॉज़ 3 to 4 मार्क्स रो क्वेश्चन आगे हेई पारिबो ट्रस्टेड रो आउ किछि नै या बुझिला समस्तंगो आउडे लेखो नेक्स्ट रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ओके फाइन रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस revocation of license हैला एतिकी रहले तमरे कोन 21 क्वेश्चंस की 20 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस जोडा की मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम द कंपनी लॉ पर्सपेक्टिव फाइन एबे हेडिंग दियो इंडस्ट्रियल लॉ इंडस्ट्रियल लॉ industrial law the first thing is calculation of amount of gratuity compulsory question आसुची सेडा डिसेंबर अटेम्प्ट्स रे calculation of gratuity is coming for 3 to 4 marks तो gratuity रो जहाँ भी हमरो क्वेश्चन आस्थिला कि Mr. Mahavir joined the company on particular date and retired on a particular date ता salary थिला 70,000 per month he also received conveyance allowance rupees 20,000 per month and average overtime INR 1000 per month तो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी टा केते हेई पारिबो बोली कहि से पचारची तो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कन्वर्ट कैलकुलेट करिया पे कोन हमर पर्टिकुलर फार्मूला अछि सेडा यूज करिकि करिबा कथा तो पेज नंबर 5242 रे अछि क्वेश्चन डा पेज नंबर 5242 स्कैनर क्वेश्चन आ गुटे से वर्कबुक रे देछि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट सेम रे आगा तुमको पचार पारियो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी हैला अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी गुटे एंड मैक्सिमम सीलिंग लिमिट तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट मध्य से गुटे आगा आसीबो तमरो नेक्स्ट लिखो validity of refusal of the company gratuity act ro validity of refusal of the company ए कैटेगरी अंडर रे तमरो टू प्रकार माने टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आसुची validity of refusal of company माने जदि कंपनी गोटे जिंसडा मना करूची तो सेडा केते दूर ठीक हैला सेडा हमें देखिबा पड़िबो तो से कोन करची गोटे क्वेश्चन देछि जोडरे कि से कहूची कोन एम्प्लॉयमेंट हे जेछि एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हे जेछि एबे आसी कि लोक ग्रेच्युटी मागु चंदी जोडा कि से लोक आगुर किछि ले काम कर नथिबो तो से केस रे कोन हबो किमा कोन ग्रेच्युटी अमाउंट अधा जाइछि अधा जाइनी तो एडा ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट लागिबो कि तो कंपनी जेतलो रिफ्यूज करूची तो को जिंसो से भीतर को आसीबो से सब आसी तमरो ए कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अंडर रे तमरो आस्थिला क्वेश्चन 2013 डिसेंबर रे 4 मार्क्स पे हैला पेज नंबर 5241 forfeiture of gratuity very important question चार थरे रिपीट हेची forfeiture of gratuity and procedure for determining gratuity तो तमरा ऑब्वियसली कैलकुलेशन अंडर आगा पळा आछे एडा मध्ये प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ग्रेच्युटी
लेख सीजनल एस्टाब्लिशमेंट, सीजनल एस्टाब्लिशमेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स में से पचारछि पेज नंबर 5.237 रे अछि तमरो स्कैनर क्वेश्चन रो सीजनल एस्टाब्लिशमेंट, सीजनल एस्टाब्लिशमेंट, सीजनल एस्टाब्लिशमेंट ओके नेक्स्ट होची फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, powers of the inspector, powers of the inspector appointed by the state government, very important question 6 marks में आछि appointed by state government 2021 डिसेंबर आछि 2022 डिसेंबर रे मध्य आछि very recent question also तो chances अछि अगेन रिपीट हेबा पई जेतो 23 रे बिल्कुल भी आसिने तो 24 रे पक्का आसी पारिबो तापरे तमरा वेलफेयर मेजर्स गुडा को बहुत भल से पढ़ी जीवो बिकॉज बहुत क्वेश्चंस आछि बिट क्वेश्चन सेथिरु वेलफेयर मेजर्स को पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट ना हमरा एमसीक्यू क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव रो बहुत इंपोर्टेंट ऑक्युपायर रो रेस्पोंसिबिलिटीज, occupier responsibilities, occupier responsibilities तापरे एनुअल लीव, एनुअल लीव माने शॉर्ट नोट्स जहाँ भी अच्छी मुझे 3टा पॉइंट्स को देखो शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट थिंग होची तमरा एनुअल लीव, एनुअल लीव तापरे से हैजार्डस प्रोसेस, हैजार्डस प्रोसेस, एनुअल लीव, हैजार्डस प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्लीनलीनेस ऑफ फैक्ट्री ए भितर को दीडा तो पक्का आसीबो क्लीनलीनेस ऑफ फैक्ट्री शॉर्ट नोट्स आसले तमरो 5 मार्क्स पे आसुछ हैला इंडस्ट्रियल लॉ रो मो एतिकी इंपोर्टेंट माने के चलीबे एंड आउ गुटे होचे हमरो डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड इमीडिएट एम्प्लॉयर, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड इमीडिएट एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किए और इमीडिएट एम्प्लॉयर किए है ना एलएलपी एक्ट रे कौन कौन पढ़िबो म एलएलपी एक्ट रो लेक्चर रे आगा कहि देछि अलगरे लेखि देछि हैला सेटा देखि कि फॉलो अप करिवो एबे आस तमे कमर्शियल लॉ को कमर्शियल लॉ कमर्शियल लॉ रे फर्स्ट हेडिंग दियो सोगा, सोगा सोगा अंडर रे मोस्ट इंपोर्टेंट इज केवियट एम्प्टर, केवियट एम्प्टर आउ सेकंड थिंग होची हमरा अनपेड सेलर रो जहां भी ड्यूटीज गुडा अछि अनपेड सेलर रो देन लेखो एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट्स अथॉरिटी कंडीशंस, कंडीशंस एंड वारंटीज एथिरे मोस्ट इंपोर्टेंट होचे तमरो इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन तापरे टाइटल ऑफ ओनरशिप, टाइटल ऑफ ओनरशिप, टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑक्शन सेल रो 2 मार्क्स क्वेश्चन आसिले आसुची ऑक्शन सेल रो बेसी किछि तो नाही हला खाली को प्रोसीजर केबे एंड हबो कोन हबो से ओडागा पचारियो देन
most important is breach of warranty. Circumstances of breach of warranty. Circumstances of breach of warranty. Circumstances of breach of warranty. Again same thing अच्छी हमरो like MTP रे मध्य अलगा questions किछि नै same scanner रे जेमति अछि सेमति आगा अछि तो there is nothing to I mean consider again. आउ गोटे देखो 2013 डिसेंबर रे जो क्वेश्चन आसे सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट अ नॉन ओनर कैन कन्वे अ बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू इन सर्टेन केसेस लिस्ट आउट दोस केसेस से क्वेश्चन ना बहुत भल से पढ़ी कि जिवो पेज नंबर 5.130 5.130 non owner conveying a better title non owner conveying a better title. हैला एबे हेडिंग दियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए भितरे फर्स्ट देखिबो तमे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन गुडा आछि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रो वी हैव अ डिटेल्ड लेक्चर इन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इलैबोरेटिवली हैला गुडा चार्ट बने कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ता इन डिटेल मु बुझै छी से लेक्चर ता माने बाध्य होई कि देखिबो काहे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रो वी आर गेटिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑलमोस्ट 12 मार्क्स हैला दी दीडा क्वेश्चन लेखा से पचारची तो इग्नोर करिवोनी या 10 मार्क्स क्वेश्चन आस्थिला 2018 डिसेंबर रे डायरेक्ट circumstances identifying quasi contract what is the meaning of quasi contract what are the disadvantages of quasi contract बहुत प्रकार क्वेश्चन हमरे माने हमें देखु जो quasi contract भितरे हैला then indemnity and guarantee रो surety part टा surety part टा in detail देखिबो rights of finder of goods rights of finder of goods rights of finder of goods bailment and duties of bailer एडार तमरो केस लो क्वेश्चन भी आसी परियो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आसी परियो bailment and duties of bailer bailment and duties of bailer pledge part रे कौन कौन इंपोर्टेंट मो कहूची pledge part रे we have most important first तमे देखिबो pledge by non owners pledge by non owners pledge by non owners rights of pony rights of pony rights of pony तमरो केस लो क्वेश्चन आगा आसुची एडारू हला प्लेज पार्ट रो केस लो क्वेश्चंस आगा आसुची डिसेंबर अटेम्प्ट रे स्पेशली वी आर गेटिंग 3 to 4 मार्क्स 2015 डिसेंबर आसी 2017 डिसेंबर रे मध्ये आसी हला एजेंसी रो क्वेश्चन रे इंपोर्टेंट वन इज circumstances when an agent is personally liable एजेंसी रे गुट्टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट circumstances when an agent is personally liable an agent is personally liable an agent is personally liable
तापर लेख रेमेडीज अवेलेबल टू बायर अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखि दियो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेले को माने को प्रकार लॉफुल हेल्प टा हमें ऑब्टेन करि परिबा से हिसाब रे क्वेश्चन आसुची रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट then important one is different modes of terminating contractual relationship modes of terminating contractual relationship modes of terminating contractual relationship fraud and its types of silence question da fraud its types आउ को सर्कमस्टेंस रे साइलेंस टा फ्रॉड मानु चंदी साइलेंस क्वेश्चन टा 9 मार्क्स पे से पचारछि वेरी इंपोर्टेंट 2017 जून रे से पचारछि 5.52 पेज नंबर ऑफ स्कैनर क्वेश्चन डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड एक्सप्लेन विथ एक्सेप्शंस एंड टाइप्स ऑफ साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड तो खाली गुट्टे एक क्वेश्चन ना देखले तमरो चारटा क्वेश्चन कवर अप हे जबे भितरे तो सेडा देखिबो एंड लास्ट वन इज माइनर रो जहाँ भी माइनर्स लाइबिलिटीज एंड राइट्स एडा रहला हमर कोन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव फॉर डिसेंबर 2024 अटेम्प्ट हैला फर्स्ट एतिकी क्वेश्चंस बहुत भल से करबो देन जाएगी रिमेनिंग चैप्टर्स रो तमे कोन टेक्स्ट बुक बिल्कुल भी खुलिबोनी एट दिस पॉइंट बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक छुयनी डायरेक्ट स्कैनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबारे तमे लाग्यो हैला डायरेक्ट स्कैनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवो एंड अगेन मु कहि दोची लॉ अटेम्प्ट करियार गोटे पर्टिकुलर फॉर्मेट अछि हैला तमे जेते हैफेजेडली लिखिबो जेते पैराग्राफ वाइज लिखिबो जेते काटिबो सेते माने कम मार्क तमे स्कोर करिवो बुझला तो मु फर्स्ट कहि दोची ट्राई टू अटेम्प्ट इन टैब्युलर फॉर्मेट हैला पॉइंट वाइज फॉर्मेट टा एडॉप्ट करिवो नंबर 1 नंबर 2 होची केस लॉ क्वेश्चन माने फॉर्मेट कोन रहइबो तमरा मु कहि दोची केस लॉ फॉर्मेट टा माने आंसर करिया फॉर्मेट होची फर्स्ट थिंग होची फैक्ट्स रे कोन लिखिबो तमे कोन कोन अछि से क्वेश्चन भितरे सेडा लिखिबो सेकंड थिंग होची कोन हमरा प्रोविजन को प्रोविजन डा अप्लाई होची किमा कोन प्रोविजन और सेक्शन और एक्ट तम जोडा मन अछि सेडा लिखि पारिबो एम्ति नै कि सेडा आगे लिखियर अछि जदि प्रोविजन मन अछि प्रोविजन लिखिबो सेक्शन नंबर टा मो हिसाब रे न लिखिले भलो हैला सेक्शन नंबर लिखिले जदि भूल हे होची तो पूरा आंसर टा भूल हे जिवो तो ट्राई टू अवॉइड सेक्शन नंबर्स जदि अनलेस एंड अंटिल यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट एक्ट तो तमे जानि पारिबो को लेसन रो हैला को चैप्टर रो क्वेश्चन ना तो खाली एक्ट लिखि दबो देन कोन एनालिसिस तम हिसाब रे से क्वेश्चन को देखिकी से प्रोविजन को देखिकी कोन हेबा कथा एनालिसिस और लास्ट थिंग इज कंक्लूजन और जजमेंट एडा रहला तमर कोन केस लॉ फॉर्मेट बुझिला केस लॉ क्वेश्चन सेमती आंसर करिवो जदि प्रॉब्लम आसुची हमरो इंडस्ट्रियल लॉ रे जदि ग्रेच्युटी रो प्रॉब्लम आसुची तो एडी कोन एलिमेंट्स लिखिबो कोन कोन देछि टाइम देछि अमाउंट देछि रिटायरमेंट डेट ता देछि मंथ्स रे कैलकुलेट करिवो आ कन्वेंस अलाउंस देछि सब उडाग लिखिबो एडी लिखिबो तमरो फार्मूला एडी लिखिबो तमरो कोन कैलकुलेशन पार्ट एंड एडी बॉक्स करिगिरी आंसर ता फाइनल आंसर ता सेडी लिखिबो हैला एडा रहिले तमरो कोन एंटायर थिंग एंड एथिक्स पार्ट या मु भूली अली एथिक्स पार्ट ता मध्ये एडी ऐड कर दियो ए कैटेगरी रे एथिक्स एंड बिजनेस सॉरी एथिक्स एंड कोन थिला सेडा इमोशनल इंटेलिजेंस हैला बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस रो खाली 3 लेक्चर अपलोड हेची सेति की देखि देले मध्ये एनफ तमे फास्ट करी की देखि पारिबो फॉरवर्ड करी की देखि पारियो खाली नोट्स लेखेची सेथरे सेडा देखले मध्ये मोर देन एनफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम काम डाउन हेगिरी लेखिबो एमसीक्यू क्वेश्चन तमे आंसर करी की रखिबो डोंट वेस्ट मोर देन हाफ एन आवर फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चंस लास्ट को सेउडा अटेम्प्ट करिवो डोंट स्टार्ट विथ एमसीक्यू क्वेश्चन जोडा भी तुमको कॉन्फिडेंट लागुची से क्वेश्चन रो तमे आंसर ता स्टार्ट करियर अछि एंड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोबेबली लास्ट को लेखिबो एंड मु सुनची कोन एमसीक्यू पई दे आर गिविंग यू ओएमआर शीट्स नाउ हैला ओएमआर शीट्स दोचंदी कहि कि मु सुनिची आई डोंट नो ऑफिशियल कंफर्मेशन दा इंस्टीट्यूट तरफ रो हमो किछि एले मिलिनी आउरी तो जेबिति भी हो तमे मोस्ट कॉन्फिडेंट आंसर रो स्टार्ट करिवो एंड नीट एंड क्लीन करी के लिखिबो डोंट यूज मोर देन 2 पेन्स खाली ब्लैक एंड ब्लू पेन्स आगा यूज करिवो हैला थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम